Hey guys, this is Akansha Singh, and today we are going to cover the differences between asexual reproduction and sexual reproduction. In the previous video, I teach you the asexual reproduction and sexual reproduction. So, in this video, we will cover asexual differences between asexual reproduction and sexual reproduction. So, what is asexual reproduction? The production of new organism by the help of single parent without involvement of sex cell are called asexual reproduction. In which type of organisms we see asexual reproduction? Simpler organisms like amoeba, paramecium, hydra. We see asexual mode of reproduction in these organisms. Now, sexual reproduction. The production of organism by the fusion of male gamete and female gamete. Male gamete are produced by male and the female gamete are produced by female, and when the fusion occurs, then what type of reproduction occur? Sexual reproduction occur. एग्जाम्पल क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? ह्यूमन, टाइगर, डॉग, कैट, इन सब ऑर्गेनिज्म में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. नाउ वी सी द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है? There is a involvement of only single parent. Single parent का involvement होता है. Single parent are involved in asexual mode of reproduction. Whereas in sexual reproduction, two parent are involved. दो parents क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं, तब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो पेरेंट की नीड होती है. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज सिंगल पेरेंट आर नीडेड. इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर टू पेरेंट आर नीडेड. क्यों होते हैं दो पेरेंट की नीड? क्योंकि ये दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. इसलिए इसमें इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वी नीड टू पेरेंट. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड ओनली सिंगल पेरेंट. In asexual reproduction, there is no involvement of sex cell और गैमेट. asexual reproduction में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. there is no involvement of sex cell or gamete. but in sexual reproduction there is involvement of sex cell or gamete.
Without gamete, there is no fusion occur and no reproduction occur. In asexual reproduction, there is no fusion of gamete. फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता क्योंकि इसमें गैमेट ही इन्वॉल्व नहीं होते, तो फ्यूजन कहाँ से होगा. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट. In asexual reproduction there is no fertilization. There is no fertilization takes place. But in sexual reproduction fertilization takes place. Fertilization कब होता है? The fusion of gamete, male gamete with female gamete, then fertilization occur. So in sexual reproduction there is fertilization takes place. Now the sixth difference, offspring are identical to their parent. जो सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस होगी, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्टली कॉपी दिखते हैं अपने पेरेंट के, आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट. कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट वो आइडेंटिकल नहीं होते. हम डिफरेंसेस कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में. जो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उसमें हम डिफरेंस कर सकते हैं कि दीज आर सेकेंड जनरेशन एंड दे आर फर्स्ट जनरेशन. बट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई हु इज पेरेंट एंड हु इज ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द parent. Now the seventh difference is it is a faster process and occur in short time. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये बहुत जल्दी हो जाने वाली प्रोसेस है और बहुत कम टाइम में हो जाती है. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद फीटस बनेगा. तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है. सो इट इज़ अ स्लोअर प्रोसेस. ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है एंड अकर इन लार्ज टाइम. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस में देखते हैं? एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस में देखते हैं? ह्यूमन, कैट, डॉग. एक और डिफरेंस देख सकते हैं, इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. It is mostly found in multicellular organism. हम शुरू से एक बार देख लेते हैं. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की नीड होती है. देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, और सेक्स सेल की जरूरत नहीं होती. वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट आर नीडेड, 2 पेरेंट की नीड होती है और गैमेट सेल की जरूरत होती है. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट. फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता क्योंकि यहाँ गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं होते, तो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट. यहाँ पे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, दैट्स व्हाई देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? जस्ट आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेवंथ डिफरेंस क्या है कि इट इज अ फास्टर प्रोसेस. ये बहुत फास्टर प्रोसेस है कंपैरिजन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद फीटस बनेगा, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है. इट इज ऑन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? इट इज मोस्टली फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये मोस्टली किस में पाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाते हैं? मोस्टली इट इज फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. Example of asexual reproduction: amoeba, paramecium. Example of sexual reproduction is human, cat and dog. In the next video we will cover the methods of asexual reproduction. कौन कौन से मेथड है जो asexual reproduction में होता है. Thank you.